Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 4 of the chapter Gravitation, and this video is for class 9 students. So lecture number 3 रे आमे डिस्कस करथिले about the difference between mass and weight. आजि lecture number 4 रे आमे डिस्कस करिबा गोटे important topic of this chapter, and the name of the topic is thrust and pressure. So let's get started. So students, आमे already पढ़ीचे जे what is the meaning of force and what are the different effect of force, and we know that force is a vector quantity. ता माने force रो magnitude अछि and force रो direction अछि. So आज आमे पढ़िबा दुईटा important term बिषय. The first term is thrust, the second term is pressure. So let us understand what is the meaning of thrust and pressure. Thrust रो meaning कौन और pressure रो meaning कौन. So to understand this term thrust and pressure, I will give you some examples. So students, when you are going to school, you are keeping all your books, copies in your school bag, and तमे mark करथिबो तम school bag रो जो shoulder strap अछि, that shoulder strap is wide. What is the reason behind it? बैग रो शोल्डर स्ट्रैप कोन पई वाइड थाए. यदि बैग रो शोल्डर स्ट्रैप नैरो आसीबो देन तमे कोन प्रॉब्लम फेस करिवो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू आर कटिंग द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यूजिंग ए नाइफ, तमे देखिथिबो द एज ऑफ द नाइफ इज वेरी शार्प. आको में कहिबा शार्प एज ऑफ नाइफ, शार्प एज ऑफ नाइफ. जदि नाइफ रो एज टा शार्प नथिबो, then you will face difficulty in cutting the vegetables or the fruits. Next example, when you are striking a nail into the wall, जत्ते हम कोन करूचे गोटे nail को गोटे wall भीतर में strike करूचे using the hammer, आमे कोन देखुचे this end of the nail is very pointed. ता होची गोटे pointed end of the nail, pointed end of the nail. And when we try to enter the nail inside the wall, आमे कौन करू, आमे से nail रो pointed end को आमे कांथा पाखे रखि थाउ, and we apply force on this flat end. Flat end रे आमे कौन करू, ए hammer रे ताको में strike करू, किछि force apply करू, and the pointed end is now entering inside the wall. जदि आमे तार उल्टा काम करिबा, रिवर्स काम करिबा, ता माने कोन फ्लैट एंड को रखिबा कनेक्टेड टू द वॉल, एंड आमे कोन करिबा ए पॉइंटेड एंड रे आमे हैमर को स्ट्राइक करिबा, ताहले नेल टा कोन एंट्री करिबो कि कांथा भितर को. द आंसर इज नो. आमे जत्ते बेले गोटे नेल को आमे स्ट्राइक करूचे, आमे कोन करूचे ना नेल रो पॉइंटेड एंड को एंट्री करूचे इनसाइड द वॉल, and आमे जो force apply करूचे, the force is applied on the flat end. What is the reason behind it? Next example, तमे देखिथिबो it is difficult to walk on the sand. Desert रे बहुत sand थाए, तो sand ऊपर चालिबाटा बहुत difficult. But you see that the camel walks very easily on sand or on desert. What is the reason behind it? Just look at, this is the feet of the camel. The next example, when you are standing on sand, तमे देखिथिबो your feet goes inside the sand. Your feet goes inside the sand. But if you lie on the sand, then your body does not go inside sand. तमे निजे ट्राई करि परिबो. सपोज गोटे एरिया रे किछि सैंड अछि, ट्राई टू स्टैंड ऑन द सैंड. तमे कोन देखिबो तमर फीट से सैंड भितर को किछि अमाउंट रे एंट्री करि जिवो. बट इफ यू लाई डाउन ऑन द सैंड, तमे सैंड ऊपर कोन करिवो ना सोई पडिबो जदी, देन तम बॉडीटा सैंड भितर को किछि एंट्री करिवो नाही. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो बर्तन आमे जहा सब एग्जांपल देखले, सबू एग्जांपल को आमे वन बाय वन एक्सप्लेन करिबा, एंड सबू एग्जांपल रे गोटे ही सिंगल कांसेप्ट अछि,
and that concept will be discussed in this class. So students, आमे जानिचे जे फोर्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी, ता माने फोर्स रो मैग्नीट्यूड अछि as well as it has direction. Force has magnitude as well as direction. So if you look at the first example, school bag, when we are keeping the school books and copies inside the bag, say school book और copy रो किछि weight थाए, and we know that the weight is always acting vertically downward. तो वर्तमान आमे जते बेले स्कूल बैग को आम कांधरे रखिबा, then the weight of the school bag will be acting on our shoulder. ठीक अछि, तो आमे बैग को रखुचे on our shoulder. So बैग रो बा से जो बुक रो जो weight अछि, that weight is acting in this vertically downward direction, which is perpendicular to our shoulder. ता माने the weight of the bag is perpendicular to our shoulder. Look at the second example. In the second example, we are cutting this fruit with a knife, and to cut the fruit we have to apply a force in the downward direction. We have to apply a force in this downward direction. Yes or no? Okay. तो ए कैसे भी कौन होची, आमे जो फोर्स अप्लाई करूचे, that force is perpendicular. The force is perpendicular to the surface of fruit. To the surface of fruit. आमे जो फ्रूट को एबे तो कट करूचे, से फ्रूट रो सरफेस को फोर्स होची perpendicular. Okay. Now look at the third example. When you are striking this nail so that it will enter inside the wall, the force is also perpendicular to the wall. आमे जो फोर्स अप्लाई करूचे, that force is perpendicular to the wall. Now look at the fourth example. This camel is walking on the desert. So a camel रा जहाँ थी वो weight, that weight is also acting vertically downward. Means this weight is a force, and the force is perpendicular to the surface of the sand, but to the ground. Again, this is a perpendicular force. And now when you are standing on the sand or when you are lying on the sand, definitely the weight of your body is also acting in the vertically downward direction. That means the force is perpendicular to the surface of the desert. So in all these examples, we saw that the force is acting perpendicular to the surface of a body. Is that clear? In all these examples, in all the 5 examples, we saw that the force is acting perpendicular to the surface of the body. So if a force acts perpendicular to the surface of a body, then that force is known as thrust. So students, I hope you have understood what is the meaning of thrust. मन रख, जदि गोटे फोर्स गोटे बॉडी को परपेंडिकुलरली माने 90 डिग्री रे एक्ट करे, then that force is known as thrust. So let me write the definition of thrust here. I can write here: if a force acts perpendicular to the surface of a body, it is known as a thrust. So basically remember that thrust is a force, but that force must be perpendicular to the surface of a body. If the force is not perpendicular to the surface of the body, it is not a thrust, it is a normal force. ठीक अछि? तो from this discussion आमे या कहि परिबा जे every thrust is a force. Every thrust is a
force, but every force is not thrust. Every force is not a thrust. कहीं ना गोटे फोर्स को आमे केते बड़े थ्रस्ट कहिबा ना जदि से फोर्सटा गोटे बॉडी को परपेंडिकुलरली एक्ट करथबो से केस रे आमे फोर्स को थ्रस्ट कहि परिबा. But if the force is not perpendicular to the surface of the body, then we cannot call it as a thrust. But every thrust is a force. So आमे एबे कहि परिबा जे थ्रस्ट को मेजर करिया पई आमे को यूनिट यूज करिबा. To measure thrust आमे यूज करि परिबा the same unit as we use in case of force. फोर्स को मेजर करिया पई आमे जो यूनिट यूज करूचे थ्रस्ट को मेजर करिया पई आमे से सेम यूनिट मेजर करि परिबा. So SI unit of thrust, SI unit of thrust कौन आसीबो? The SI unit of thrust is same as the SI unit of force, that is Newton. Newton or capital N is the symbol. Is that clear? Okay. तो आमे एबे कौन जानले ना आमे जो फोर्स अप्लाई करूचे जदि से फोर्सटा गोटे बॉडी रो सरफेस को परपेंडिकुलरली एक्ट कला then that force is known as thrust. Okay. So now आमे ए जो एग्जांपल जो क्वेश्चन पचारथिले से क्वेश्चन रो आंसर को आमे एबे एक्सप्लेन करिबा. तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन थिला जेते बळे आमे स्कूल बैग को आमे देखुचे स्कूल बैग रो जो शोल्डर स्ट्रैप अछि दैट शोल्डर स्ट्रैप इज वाइड तार रीजन कोन एंड आमे जेते बळे किछि वेजिटेबल कट करूचे बा किछि फ्रूट्स को कट करूचे यूजिंग ए नाइफ द एज ऑफ द नाइफ शुड बी वेरी शार्प. जदि नाइफ रो एज ता शार्प न हे किम थिबो इट इज ब्लंट. इफ द एज ऑफ द नाइफ इज ब्लंट, ब्लंट इज द ऑपोजिट ऑफ शार्प. जदि नाइफ रो एज ता ब्लंट थिबो in that case it will be very difficult to cut the vegetables. What is the reason behind it? So students मन रखो thrust होची गोटे force which is acting perpendicular to the surface of a body. But से thrust रो effect गोटे body उपरे अधिक आसीबो कि कम आसीबो सेटा कहा पर डिपेंड करिवो. That will depend on the area on which the thrust is acting. Thrust effect less हबो कि more हबो सेटा कहा पर डिपेंड करिवो. It will depend on the area on which the thrust acts. So let me write here the effect of thrust depends on the area on which it acts. Okay, the effect of the thrust depends on the area on which it acts. And remember that the effect of thrust is more if it acts on a smaller area or on a small area. जदि गोटे गिवन थ्रस्ट बा गोटे गिवन परपेंडिकुलर फोर्स गोटे स्मॉल एरिया पर एक्ट करे देन तार इफेक्ट अधिक आसीबो. And if the same thrust, the same perpendicular force will act on a larger area, then its effect will be smaller. ता माने जदि एरिया कम रहिबो then thrust रो इफेक्ट अधिक आसीबो. जदि एरिया टा अधिक रहिबो then thrust इफेक्ट कम आसीबो. So now try to understand all these examples. तो आमे जेते बेले गोटे स्कूल बैग को आम शोल्डर रे रखुचे देन से बैग रो वेट इज ए फोर्स एंड द वेट ऑफ द बैग इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू आवर शोल्डर. जदि
शोल्डर स्ट्रापटा वाइड हबो ता माने कोन हबो जो फोर्स ऐड करूची आम शोल्डर उपरे दैट विल एक्ट ऑन ए लार्जर एरिया ठीक अछि जदी बैग रो स्ट्रैपटा वाइड हबो देन कोन हबो एरिया ऑफ द थ्रस्ट विल इंक्रीज ता माने से जो थ्रस्टटा गोटे अधिक बड़े गोटे लार्जर एरिया पर एक्ट करिवो आ आमे कोन पढिचे जेते बड़े थ्रस्टटा गोटे लार्जर एरिया पर एक्ट करे तार इफेक्टटा कमी जाए ता माने जदी हमर शोल्डर स्ट्रैपटा वाइड हबो ताहले कोन हबो से जो बैग रो जो वेट अछि दैट वेट से वेट रो इफेक्टटा कमी जिवो ता माने आमे आम कांध उपरे बा आम शोल्डर उपरे किछि एक्स्ट्रा पेन हबनी बा किछि एक्स्ट्रा स्ट्रेस आसीबो नाही इज दैट क्लियर सिमिलरली if you look at this second example when you are cutting the vegetable or the fruit जदि knife ro edge टा sharp थिबो then the sharp edge of the knife has small area ठीक अछि जदि sharp edge थिबो knife रो then तार area small थिबो तो आमे जो फोर्स अप्लाई करूचे आमे जो थ्रस्ट अप्लाई करूचे से थ्रस्टटा गोटे स्मॉल एरिया उपरे एक्ट कला ताहले कोन हबो से थ्रस्ट रो इफेक्टटा बढ़ी जिवो इफ द एरिया इज स्मॉल द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज मोर if the effect of thrust is more then we can easily cut the vegetable or the fruit similarly if you go to the third example जदि हमें नेल रो पॉइंटेड एंड को एंट्री करेबा इनसाइड द वॉल तो कोन हबो पॉइंटेड एंड रो एरिया स्मॉल ओके पॉइंटेड एंड हैज अ स्मॉल एरिया तो हमें जो फोर्स अप्लाई करूचे यूजिंग द हैमर that force is the thrust the perpendicular force so if that force will act on a smaller area then its effect will be more ता माने आमे से नेल रो पॉइंटेड एंड को जितरा आमे कोन करूचे ना वॉल रे एंट्री करे को ट्राई करूचे तो से केसरे कोन होची आमे जो फोर्स अप्लाई करूचे आमे जो थ्रस्ट अप्लाई करूचे दैट थ्रस्ट इज एक्टिंग एट अ स्मॉल एरिया गोटे स्मॉल एरिया रे से थ्रस्ट एक्ट करूची and when the thrust acts on a smaller area what happens its effect increases the effect increase way and that's why the nail easily enters inside the wall is that clear similarly if you look at the camel feet आमे तेरा camel रा feet को देखिबा तम देखो ए camel feet रो जो एरिया अछि the area of the camel feet is larger than the area of our feet our feet ro jo area achi compared to that the feet of the camel is very large and that's why the weight of the camel is acting on a larger area ଆଉ जदि larger area act करिवो thrust ता तार effect कमी जिवो ता माने camel रो feet ता से बाली भितरे बा से सैंड भितरे एंट्री करिवो नाही बिकॉज थ्रस्ट इफेक्ट कमी जाउची कोन पाई ना कैमेल रो जो अछि फिट दैट फिट हैज अ लार्जर एरिया बढ़ी गले थ्रस्ट इफेक्ट कमी जिवो तो जो केस रे हमें जो केस हमें चाहिबा जे थ्रस्ट इफेक्ट अधिक रहू से केस रे हमें एरिया कमे देबा जो केस रे हमें चाहिबा जे थ्रस्ट इफेक्ट अधिक रहू से केस रे कम रहू से केस में कोन करिबा एरिया को बढ़ाई देबा सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन को सिचुएशन रे हमर थ्रस्ट इफेक्ट अधिक दरकार आ को सिचुएशन रे थ्रस्ट इफेक्ट कम दरकार व्हेन वी आर कटिंग वेजिटेबल्स वी नीड मोर इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट so that we can easily cut the vegetable that's why we have to make the edge of the knife sharp similarly when we want to enter a nail inside a wall we have to ensure that the effect of the thrust is more so that the pin or the nail can easily enter inside the wall and for that we have to make the one end of the nail very pointed means the area will decrease and the effect of thrust will increase so students
जो जो केस रे थ्रस्ट इफेक्ट लार्जर दरकार आम एरिया कमे देबा तो मैं लिखुचे एटी लार्जर इफेक्ट of thrust means the area should be smaller area, and if we need less effect of thrust then we have to we have to increase the area or we can choose a larger area. जदि स्कूल बैग रो स्ट्रापटा बा शोल्डर स्ट्रापटा वाइड न हे कि नैरो थांता देन से स्कूल बैग रो वेटटा गोटे स्मॉलर एरिया पर ऐड कर थांता. जदि एरिया स्मॉल हे जिवो देन से थ्रस्ट रो इफेक्ट अधिक हे जिवो ता माने आम शोल्डर को पेन हबो, विल फील पेन इन द शोल्डर. सो टू मिनिमाइज द पेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट. And to minimize effect of thrust, we have to increase the area, and that's why the shoulder straps of the school bag are wide. So वर्तमान आमे second term को discuss करिबा जोड़ा होची pressure. So pressure is nothing but thrust per area. Pressure is nothing but thrust per area. So let me write here the important formula. Formula कौन? Thrust is nothing but pressure. Pressure is nothing but the thrust acting per unit area. Okay, thrust acting per unit area means the perpendicular force divided by the area on which the force is acting. That is known as pressure. Is that clear? So now tell me what should be the SI unit of pressure. So pressure is equal to thrust by area, and we know that thrust is one kind of force. So force को measure करने पाई we use the unit Newton. Then for area we use the unit meter square. So Newton per meter square, or I can write Newton meter power -2. This is the SI unit of thrust. This is the SI unit of pressure. The SI unit of pressure is Newton per meter square or Newton meter to the power -2. And this unit has a special name. Its name is Pascal. Its name is what? Pascal. Okay. So 1 Pascal is equal to 1 Newton per 1 meter square. ता माने जदि 1 न्यूटन अमाउंट रो गोटे परपेंडिकुलर फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ऐड करूची देन द प्रेशर इज नोन एज 1 पास्कल. So hopefully you have understood what is the difference between thrust and pressure. Thrust is a force, but thrust per area or thrust divided by area will give you pressure. And from this example, from this formula, you can be clear that if area increases, जदि area बढ़ी जिवो then pressure कमी जिवो, जदि area कमी जिवो then pressure बढ़ी जिवो. ता माने जदि गोटे thrust टा smaller area ऊपर add करूची then it has more effect, it has more pressure. Effect of thrust को हमें कहि परिबा pressure कहि परिबा. Is that clear? तो वर्तमान आमे गोटे एग्जांपल देखिबा, गोटे सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करिबा. So let us go to solve this numerical, and from this numerical you can understand what is the basic difference between thrust and pressure. Okay, this is example 10.6 of your NCERT book. The कौन is the question टा? A block of wood is kept on a tabletop. गोटे wood block अच्छी and से wood block रो जो mass के देची, the mass of the wooden block is 5 kilogram. Okay, ता माने mass केते कहिला, mass होची 5 kilogram and its dimensions are 40 cm, 20 cm and 10 cm. ता माने से wooden block रो length
breadth और height कहितला 40 cm 20 cm and 10 cm. The question is find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimensions. First bit कौन कहला bit A रे कहला 20 cm into 10 cm. देखो जदि मु वुडन ब्लॉक को रखिबी लाइक दिस ता माने this surface will be in contact with the wooden block. This surface will be in contact with the tabletop. ता माने एई जो वुडन ब्लॉक रो जो वेट अछि से वेटा एतिकी एरिया उपरे ऐड करिवो. But if I place the wooden block like this, then कौन हबो, then the weight of the wooden block will act on this larger area. ठीक अछि. तो आमे both case रे बाहर करिबा what is the pressure exerted by the wooden block. So pressure माने कौन, force बा thrust per area. तो प्रेशर केते, प्रेशर होची thrust per area and thrust is the perpendicular force. तो ए केस रे perpendicular force कोटा हबो बा thrust कोटा हबो, thrust is the weight. काहे कि ए वुडन ब्लॉक जो हम नेचे से वुडन ब्लॉक रो वेट टा ऐड करिवो vertically downward. In both the cases the weight will be same. And what is weight? Weight होची m into g. So mass केते कहिची, mass 5 kg कहि देची. So thrust is equal to weight of the block और सेटा केते हबो, सेटा हे जिवो m into g. m केते, m होची 5 kg, g केते, g होची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो एटा केते हे जिवो, एटा हे जिवो 49 न्यूटन. So thrust is 49 न्यूटन. Is that clear? Okay. जदि हमें वुडन ब्लॉक को रखिबा लाइक द फर्स्ट फिगर ता माने ए जो एरिया अछि दिस एरिया एतिक एरिया ऊपर से थ्रस्ट ऐड करिवो. तो वर्तमान बिट ए रे आमे जो एरिया बाहर करिबा एरिया केते आसीबो 20 cm into 10 cm that is equal to 200 cm square. But area रो SI unit कोन ना मीटर स्क्वायर. So remember that 1 centimeter square is equal to 10 to the power minus 4 meter square. Is that clear? 1 centimeter square is equal to 10 to the power minus 4 meter square. So 200 centimeter square कितना वो 200 into 10 to the power minus 4 meter square. That is equal to 200 को लिखि परिबी 2 into 10 to the power 2. Then एठी गोटे अछि 10 to the power minus 4 अछि. Okay, meter square. So the answer will be 2 into 10 to the power minus 2 meter square. So ए केस रे प्रेशर केते आसीबो, प्रेशर P1 केते आसीबो, thrust केते 49 न्यूटन and divided by area केते, area होची 2 into 10 to the power minus 2 meter square. So 49 by 2 केते आसीबो 24.5 and this 10 to the power minus 2 will go to numerator, it becomes 10 to the power plus 2. So 24.5 into 10 to the power 2 Newton per meter square ba taku likhi paribi Pascal. Is that clear? So this is the pressure in the first case. Now in the second case, case B रे एबे कोन अछि ना एई जो रहला एरिया टा the thrust or the weight will act on this area and this area is definitely larger than the previous area. तो बर्तन A2 केता हबो, second area केता आसीबो 40 cm into 20 cm that is equal to 800 cm square. Again we have to convert the area from centimeter square to meter square. So आमे पढिचे जे 1 centimeter square is equal to 10 to the power minus 4 meter square. So 800 centimeter square केता हबो 800 into 10 to the power minus 4 meter square that is equal to 8 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 4 meter square equal to 8 into 10 to the power minus 2 meter square. Is that clear? So second case रे pressure केते आसीबो P2 केते आसीबो, thrust केते 49 Newton divided by area केते, area होची 8 into
10 to the power minus 2 meter square. So if you solve it, answer kete asibo? Answer asibo 612.5 Newton per meter square or 612.5 Pascal. Is that clear? And if you look at the first case, the 24.5 into 100 but 10 to the power 2 ekate asibo 2450 Pascal. So you can see that in both the cases, case A और case B रे से जो आमे वुडन ब्लॉक नीचे से वुडन ब्लॉक रो वेट सेम अछि 49 न्यूटन किंतु फर्स्ट केस रे कोन होची से weight of the wooden block is acting on a smaller area. That's why the pressure is larger, 2450 Pascal. But in the second case, the thrust or the weight of the object is acting on a larger area. That's why the pressure reduces. तामाने जदि एरिया अधिक हो जिवो thrust रो इफेक्ट कमी जिवो आ जदि एरिया कमी गला then thrust रो इफेक्ट बढ़ी जिवो. So this is all about thrust and pressure. So hopefully आमे आज रो क्लास रे जहा डिस्कस कले everything is crystal clear to all of you. You have understood the difference between thrust and pressure. If so, then please hit the like button, and if you are new to my channel, then please subscribe to it and press the bell icon to get all the future notifications, and share this video among your friends so that everyone will be benefited. And again, thanks a lot for watching this one.